Hello and welcome to this exciting new episode of Sattology, debunking mythology. Sattology means science of truth or study of truth. Opposite of that is mythology, which means science or study of fake lie or imagination. Thank you all the viewers for liking our live shows, and I really like what you commented yesterday extensively. So do join today. I have a very special guest today. You love him on social media, and he has been presenting. He has been on show many times previously, long time back maybe. Then the channel has grown a lot, and he has presented facts from Sanatan Dharma, and you like his discourses on Twitter also. So let's welcome Aabhas Maldahiyar. Welcome Aabhas. नमस्ते। नमस्ते। ये अभी जो भारत ने का ये जो चल रहा है अपना, विल हैव जैसे फ्री फ्लो डिस्कशन, सो व्यूअर्स यू कैन कीप आस्किंग क्वेश्चंस. So if you want to follow Aabhas, you can do Aabhas 24 on X, and you can see what he writes over there. And he has been fighting, I say, viciously for Sanatan Dharma interests with many people who are arguing very loose arguments people give. So Abbas, ये UN वोट से भारत पे क्या असर पड़ेगा अभी इस समय? Because I think India has taken a very principled stance that they are against terror globally. Yes. What I feel, we can flow the conversation English or Hindi. What? दोनों में करते हैं. More people will understand Hindi as well. You know? Okay. So एक बात तो मैं बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ कि ये जो स्टैंड भारत ने यूएन में लिया है, इट इज अ बिग, एक मैं बोलूंगा एक प्रायश्चित की तरह था जो भारत ने 1947-48 में किया था, जो इजराइल के पक्ष में वोट नहीं किया था उस वक्त। और मेरे हिसाब से ये एक प्रायश्चित की तरह था। और इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट जो प्रिंसिपल केसेस होते हैं या फंडामेंटल केसेस होते हैं, वहां पे हम अपनी स्टैंड को भी काफी फर्म, फाउंडेशनल और फंडामेंटल रखें। पहले जो भारत अभी पहले भारत अक्सर नॉन अलाइन मूवमेंट में बिलीव करता था। मेरा मानना है अभी भी वी आर वेरी नॉन अलाइन। हम अपने आप को किसी भी अलाइनमेंट की तरफ लेकर के नहीं जाना चाहते हैं। ये भारत का खुद का स्टैंड है। लेकिन यहाँ पे मैटर बिल्कुल इस तरह से उभरा कि ये आउटराइट रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म जो एक बहुत ही भयावह रूप लेकर के 7 अक्टूबर को इजराइल की धरती पर आया। और जैसा कि लोगों का कहना है, जो होलोकॉस्ट सर्वाइवर्स हैं, उस तरह के लोग, उन्होंने भी जो ओपिनियन दिए, उनका कहना था कि होलोकॉस्ट के बाद ये अब तक का सबसे दयनीय और सबसे दर्दनाक अटैक था। ऐसे में लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। और जिस दिन ये घटना घट रही थी, हम सभी लोग टीवी चैनल से लगे हुए थे, देख रहे थे कि क्या हो रहा है, किस तरह का तांडव मचा हुआ है। और हर किसी का ये ओपिनियन था कि इजराइल कुछ ना कुछ तो करेगा ही, बिकॉज इजराइल वो देश है जो एक पूरी बंजर धरती को, मतलब वो जो धरती थी जहां पे इजराइल क्रिएट हुआ, दैट वाज अ बैरन लैंड, और उसको उन्होंने अपने मेहनत और पूरी श्रद्धा से उसको एक बहुत ही समृद्ध देश के रूप में उभारा। उनका डेडिकेशन हम राइट फ्रॉम 1949 ऑनवर्ड्स देख सकते हैं, किस तरह से वो अपने देश को आगे लेकर के गए। लेकिन कहीं ना कहीं एक बात जरूर खटक रही थी कि आज तो सब कोई थोड़ी सी सहानुभूति दिखा रहे हैं इजराइल के लिए, लेकिन कल से जब इजराइल इन सारे टेररिस्ट एक्टिविटीज का जवाब देगा, तो फिर वही रोना धोना शुरू हो जाएगा, दैट सेव गाजा, सेव पैलेस्टाइन। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। हम लोगों ने देखा कि भारत में भी उस दिन, जब पहले दिन का जब किस्सा था, तो सारे पॉलिटिशियन ने उसको कंडेम किया, चाहे वो कांग्रेस के थे, सबने कुछ ना कुछ बातें लिखी इसके बारे में। अगर हम कुछ सुप्रीम लीडर्स को भूल जाए, बट लार्जली बिकॉज ये सबके लिए काफी शॉकिंग इंसिडेंट था। इंसान तो इंसान ही होता है। लेकिन उसके बाद जैसे ही इजराइल अटैक करना शुरू किया, और रादर मैं कहूंगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए जब उसने मोर्चा खोला, तो सभी लोग विचलित हो गए। और ये बात लोगों को बताना बहुत जरूरी है दैट ये जो हमास है, हमास एक्चुअली वहां पे सरकार में है। हमास की सरकार है वहां पे उनके पार्लियामेंट में 132 सीटें हैं। एक 132 सीट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 74 सीट्स, यानी कि 50% से भी ज्यादा सीट्स हमास के पास है। और उन्होंने ये गवर्नमेंट बनाया, और जब उन्होंने गवर्नमेंट फॉर्म किया था, उससे पहले
ऑलमोस्ट ट्रूस हो चुका था और हालात ऐसे थे कि इजराइल वाज आल्सो ओके एंड एवरीथिंग वाज फाइन। देन वन फाइन डे हमास कम्स और सारी चीजें बदलने लगती हैं। अब हम इनका पूरा अगर पूरे सिस्टम को देखना शुरू करेंगे तो वो हमेशा सिविलियंस को यूज करते हैं। हॉस्पिटल्स के अंदर उनके बेस कैंप्स होते हैं, मिलिट्री बेस कैंप्स, उनके ऑब्जर्वेटरीज वगैरह स्कूल्स में रहेंगे। सो उन्होंने डेलिबरेटली सारे सिविल स्पेसेस जो होते हैं उसको मिलिट्री अड्डा बना के रखा था और डेलिबरेटली किया गया था। और जब इसराइल अटैक कर रहा था, अब उनके ऊपर टेररिस्ट अटैक हो चुका है जो कि सबसे भयावह है। अब इसराइल करे तो क्या करे? अगर आप हमास के अगेंस्ट खड़े नहीं होते हैं, इसका मतलब आपने टेररिज्म के आगे आप हार चुके हैं। अब लोगों का ये ओपिनियन आ रहा था भारत के डिसीजन को लेकर के कि हमने पैलेस्टाइन को लेट डाउन किया है। लेकिन दो चीजें यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। पहला ये कि वो पैलेस्टाइन की ही सरकार है जिसको एक मेजॉरिटी से सरकार में लाया गया था। और अगर पैलेस्टाइन की हम पूरी इतिहास को देखना शुरू करेंगे, शायद ये बहुत ही अनपॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकली इनकरेक्ट स्टेटमेंट भी लग सकता है, लेकिन 1917 से पैलेस्टीनियन अरब्स ज्यूज पे अटैक कर रहे थे और उनकी आइडिया डेफिनेटली इस्लामिक डॉक्ट्रिन से काफी इंस्पायर्ड थी। और जो इनफैक्ट आज लोग बोलते हैं कि यासिर अरफात बहुत अच्छे नेता थे या XYZ, लेकिन यासिर अरफात ने भी खुद ये कहा था कि हम जो टसल है ज्यूज और मुस्लिम्स के बीच में, उसके लिए उन्होंने कुरान को कोट किया था और उस वार को काफी इंपॉर्टेंट बताया था। और ये जो हदीस जो हमेशा मेंशन हो जाता है कि वेयर दे से कि जजमेंट डे तब तक नहीं आएगी जब तक यू डोंट गेट रीड ऑफ द ज्यूज। सो क्या जो इस्लामिक वर्ल्ड है पूरी तरह से क्या इसको आकर कंडेम करेगा? और अगर उनको इतना ही पैलेस्टीनियंस के लिए इतनी दया आ रही है, जो आनी चाहिए, अगर जो इनोसेंट है, अब हम लोगों को भी ये महसूस हो रहा है कि शायद जो नॉर्मल सिविलियंस हैं, जो सिविलियंस शायद इसमें कुछ लेना देना नहीं है, उनके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। लेकिन तो इसमें पूरी मुस्लिम वर्ल्ड साथ आकर के पैलेस्टीनियंस को इवैक्यूएट क्यों नहीं कर रही है? अभी तो इजिप्ट ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे, हैव सेड कि हम कोई रिफ्यूजी को नहीं लेंगे। और लेकिन जब उसके साथ साथ बाकी के जितने भी इस्लामिक स्टेट है सभी ने मना कर दिया है कि वी आर नॉट गोना टेक एनी रिफ्यूजी। कतार जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनफैक्ट हमास को भी काफी सपोर्ट करता है और हमास के जो लीडर हैं वहीं पे बैठे हुए हैं, वो भी पैलेस्टीनियन के इवैक्यूएशन के, अगर इतनी इस्लामिक स्टेट आज साथ में अगर मिल जाते तो क्या वो पैलेस्टीनियंस को इवैक्यूएट नहीं कर सकते थे? क्या वो उनको एक अच्छी जिंदगी नहीं दे सकते थे? जब भारत ने ये इतना बड़ा कदम उठाया था, CAA का स्टेप ला करके, और बोला था कि हम जो प्रताड़ित माइनॉरिटीज हैं, इसमें हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट इंक्लूडेड और क्रिश्चियंस इंक्लूडेड थे, जब हम उनको लेने के लिए तैयार थे, तो ये बीड़ा इस्लामिक देश क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्यों नहीं वो बीड़ा उठा सकते हैं कि हम आपका देख रेख करेंगे, हम, और आप पूरी ग्राउंड को क्लियर कीजिए, फिर वी विल डिस्ट्रॉय हमास। इसका अर्थ ये होता है कि कहीं ना कहीं आपको हमास से प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम इजराइल से, आपको पैलेस्टाइन के लोगों से कोई मोहब्बत प्यार नहीं है। आपको सिर्फ एक ही मुद्दा है कि इजराइल का डिस्ट्रक्शन हो, विच कम्स फ्रॉम, क्योंकि आपका जजमेंट डे तो आएगा नहीं। और यहां पे भी भारत में भी हमने देखा कि केरला में क्या हुआ, हमास के लीडर आकर के वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि, और वहां पर डिस्कशन हो रहा है कि हिंदुत्व और जियोनिज्म को हटाना है। अब जियोनिज्म भी क्या है? जायोनिज्म इज नथिंग बट एक यहूदियों का जो उनका होमलैंड है वो बनाना है, और उसका डिफेंस, दैट बेसिकली मींस जायनिज्म। तो जायनिज्म में क्या खराबी है? जायनिज्म में क्या गलती है? अगर दरुल इस्लाम हो सकता है तो फिर एक जीविश स्टेट क्यों नहीं हो सकता है? चलिए, आज तो हम हिंदू राष्ट्र की बिल्कुल बात नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ यहूदियों के राष्ट्र की बात करते हैं। तो इतने जब 56-57 इस्लामिक स्टेट है, तो फिर यहूदियों का एक जो देश क्यों नहीं बन सकता? उसमें क्या परेशानी है? तो जायनिज्म इज इक्वल टू टेररिज्म, जायनिज्म इज इक्वल टू नाजिज्म, इस तरह। बट ये भी अपने आप में काफी ऑक्सीमोरोन है। अगर डिस्कशन आगे बढ़ा तो मैं इसके बारे में बात कर सकता हूँ कि कैसे इनफैक्ट पैलेस्टीनियंस ने नाजिज्म को सपोर्ट किया था। और भारत में ये घटना, भारत में जिस तरह का रिएक्शन आ रहा है, उसमें मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं काफी प्रिंसिपल स्टैंड है भारत का, काफी स्ट्रॉन्ग स्टैंड है। हमने कहीं ना कहीं ये इस बार दिखा दिया है कि हम
किसी भी फॉर्म के टेररिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था चार्टर में, ये जो यूएन में मुद्दा उठाया गया था, वहां पे हर चीज की बात की गई, सीज फायर की, लेकिन कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं था कि जो जिनको हॉस्टेज लिया गया है उनको हमास रिलीज करे, उसका जिक्र नहीं है। तो आप सीज फायर करवा दोगे, फिर वो हॉस्टेज वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ये पूरा अपने आप में एक बड़ा टेरराइजिंग माहौल, एक डॉक्यूमेंट अपने आप में काफी टेरराइजिंग था। नहीं, आपने एक्चुअली फॉर व्यूअर्स पुराना वीडियो सेथोलॉजी में देखिए, Aabhas has pointed Petra on a map. Where is Petra? And he corrected that notion that about the Makkah, Medina, and Petra. Now, does the Qatar incident tie with a Hamas official from Qatar talking to Kerala? And like the whole thing is in the same time, and the next day there is a blast. So, how do you see the correlation? या बिकॉज ये काफी कनेक्टेड है। और जैसे इसके लिए 1920 का दौर समझना बहुत जरूरी है। तो 1920 का भी वो पीरियड बिल्कुल वैसा ही था जैसा आज का पीरियड है। उस वक्त विश्व युद्ध में ऑटोमन एम्पायर की हार हो चुकी थी। और ये वो पीरियड है जहां पे फ्रेंच और ब्रिटिश इजरायली कॉलोनी, जो पैलेस्टीनियन लैंड है या फिर वो जो वहां की जो लैंड है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने सारे स्टेट्स एंड प्लेसेस को अपने आप में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, लेकिन जो ये पैलेस्टीनियन लैंड था या जो इजराइल है उसको ओपन एंडेड रखा, उसको उन्होंने इंटरनेशनल एरिया बताया। इंटरनेशनल का अर्थ ये था कि हर किसी का कनेक्ट है वहां पे। और उस वक्त ज्यूज का माइग्रेशन होना शुरू हो गया था। दैट वाज सेकंड स्टेज ऑफ माइग्रेशन उस समय तक आ चुका था, क्योंकि जब 1905 में जब द फेलियर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन हो चुका है और एक बार फिर से ज्यूज के ऊपर परसिक्यूशन शुरू हो चुका है ईस्टर्न यूरोप में। और जब ऐसा हो रहा है तो ज्यूज माइग्रेट करके यूएसए में भी जा रहे हैं और यहां पे भी आ रहे हैं। अब ये वो दौर है जब ऑटोमन एम्पायर का फॉल हो रहा है और टर्क्स आर कंप्लीटली अगेंस्ट द फॉल ऑफ द कैलिफेट, यानी कि जो ऑटोमन्स का जो कैलिफेट है वो बिल्कुल उसके अगेंस्ट है। लेकिन भारत में केरला के मुसलमानों को मोबिलाइज किया जाता है। तो घटना घट रही है टर्की में। टर्की के मुसलमानों को कोई आपत्ति नहीं है वहां के कैलिफेट के हटने से, लेकिन केरला में इशू होता है और यहाँ के मुसलमान ये मुसलमान डिसाइड करते हैं कि वो खलीफा मूवमेंट करेंगे, जिसको हम खिलाफत मूवमेंट के नाम से जानते हैं। और वहां पे कांग्रेस उनका साथ देती है। और हम सब जानते हैं कि मोपला मसेकर किस तरह से हुआ था। तो ये जो केरला का रिलेशन है वो काफी इंटीग्रल है ऑटोमन कैलिफेट और पूरे सिस्टम को लिंक करके बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड हो जाता है। और कई बार लोग सोचते होंगे कि आखिर सऊदी या फिर जो मक्का का रीजन है वो उतना एक्शन में क्यों नहीं रहता है। हमेशा जो एक्शन में आता है वो ये जो रीजन है, चाहे वो सीरिया का रीजन हो, चाहे वो जॉर्डन का रीजन हो, या फिर जो अपर अरेबिया है यानी कि नर्दर्न अरेबिया है, वो क्यों हमेशा सीन में रहता है। उसका कारण जो अगर कोई इस्लामिक थियोलॉजी और इतिहास को समझना चाहेगा तो दे विल आल्सो फाइंड कि इस्लाम का ओरिजिन कहीं ना कहीं नर्दर्न बेल्ट में हो रहा था। और इस वजह से जितने मूवमेंट है, चाहे वो हिजबुल्लाह का मूवमेंट देखो या फिर आईसिस का मूवमेंट हो, या फिर एवरीथिंग ओरिजिनेट्स फ्रॉम देयर। और केरला हैज ऑलवेज बीन अ इंटीग्रल पार्ट, क्योंकि जब इस्लाम का एंट्री केरला में इट हैपेंड थ्रू द ट्रेड। इट वाज अ वेरी अनलाइक द नॉर्थ में जहां इट वाज थ्रू द डिस्ट्रक्शन। केरला में इस्लाम का अराइवल इज थ्रू द ट्रेड। एंड जो प्रॉपर अरेबियंस हैं या फिर जो अरेबियंस यानी कि जो नॉर्दर्न अरेबियन एक्चुअली है, वो आकर के यहाँ पे सेटल डाउन होते हैं और वहां से इनका रिश्ता इतना पुराना जाता है। और इस वजह से हमेशा से केरला का सपोर्ट कहीं ना कहीं जो इस्लामिक केरला का सपोर्ट बोलना गलत होगा, रादर इट्स मोर ऑफ द जो केरला का जो मुस्लिम ब्रदरहुड है या मुस्लिम वर्ल्ड है, उनका सपोर्ट काफी इंटीग्रली लगा रहता है ये नॉर्दर्न अरेबिया से और सारे इस्लामिक मूवमेंट को लेकर के। सो ये कनेक्ट आज का नहीं है, ये कनेक्ट उस समय तक का माना जा सकता है जब इस्लाम का जन्म हुआ था। Yeah, I mean, we see, मैं जब कोची में गया था लास्ट ईयर, तो मैंने वहाँ पे बीफ का एडवर्टाइजमेंट देखा ऑन द कोची एयरपोर्ट।
एंड आई वाज शॉक्ड। अमेरिका में भी एयरपोर्ट्स पे नहीं दिखाते हैं, बिकॉज इट हर्ट मेनी अमेरिकन्स आर वेजिटेरियन। तो वहाँ पे दे डोंट शो द बीफ ऑन द, बिकॉज मेनी पीपल आर वीगन्स। लेकिन केरल में मुझे दिखाई दिया हिंदुओं को चढ़ाने के लिए। एंड आई थिंक दे कैन नॉट डू दैट इन देयर ओन कंट्री आल्सो। सऊदी अरेबिया में भी नहीं कर सकते हैं, एंड मेनी पार्ट्स ऑफ द मिडिल ईस्ट दे कैन आल्सो डू कैन नॉट डू, because those countries are also very much aware of the religious sentiments of many Muslims who are vegetarian also. Many Muslims I know who are vegetarian. तो लेकिन the act of defiance, हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए, ब्राह्मणों को चिढ़ाने के लिए, काउ किलिंग को पब्लिक सेरेमनी के लिए पाकिस्तान में करते हैं, बांग्लादेश में करते हैं, एंड इवन इन इंडिया, वेस्ट बंगाल एंड केरल एंड इन कश्मीर आल्सो दे यूज्ड टू डू बिफोर। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये जो इंडिया ने जो एब्सटेन किया है वोट पे ऑन द प्रिंसिपल स्टैंड्स, मैं सबके देख रहा था, नफ्ताली का भी इंटरव्यू देख रहा था, बेनेट नफ्ताली का, एंड द Israelis pulled out their ambassador from Turkey. Erdogan का मैंने speech देखा. It's like a total show going on. And 56 Islamic countries don't have an army to assemble together to send to Palestine because they cannot fight with Israel. They can talk too much. But one thing I noticed, Abbas, कि their media campaign is very good, very good. The way those guys, they don't have food, they don't have electricity, but they have cameras and they have social media. How is that possible? Ki they're so good in marketing and the fake propaganda, or actors they are using in Palestine. You still saw that many places they're using actors to create a false sense of victimhood. So how is the UN body getting completely carried away with 120 votes in their favor? So, in my opinion, UN has become a toothless tiger, and perhaps it always was like that. So, it has always been sympathetic towards the cause which for which they should not be. Whether it was the case for Kashmir, whether it's the again most of the times they have tried to intervene about in the matter of Gaza, Palestine, and Israel. They have always been the key player. And I was shocked. Rather, I should not be shocked to see that जब इस रेजोल्यूशन के लिए भी इतने लोगों का वोट फॉर में आया था, क्योंकि एक जो ये एजेंडा बहुत ही क्लियरली लेकर के चलते हैं, इसको ह्यूमैनिटेरियन एजेंडा बना करके दिखाया जाता है। और हमेशा से एक जो नोशन रहा था कि जो इजराइल है, इजराइल वाज ऑलवेज अ ऑपरेसर। और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब हम 1920 के दशक की बात कर रहे हैं। 1920 के समय में भी जब यहूदी बिल्कुल, दे आर वेरी इनोसेंट पीपल, दे आर नॉट द फाइटर्स राइट नाउ, वो जस्ट आ रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सेटल डाउन इन इजराइल। और उनपे सबसे पहला अटैक मॉडर्न टाइम्स में 1917 में होता है गैलीली में, where उसके बाद it continues in 1918 or 1920, and it's a very ugly massacre like they will split the skulls in the pieces, and these all are recorded. And after doing all these massacres, when somehow for the first time the League of Nations somehow recognizes that state of Israel exists, उन्होंने recognize किया, तो वहां पे दंगे भड़क जाते हैं पूरी तरह से। और दंगे भड़कते हैं तो अभी तक इजरायलियों ने या फिर ज्यूज ने हथियार नहीं उठाया है, ये वो समय है। एंड दे आर लाइक द परसिक्यूटेड पीपल राइट नाउ, उनका परसिक्यूशन हो रहा है। एंड हिटलर हैज स्टिल नॉट स्टार्टेड देयर परसिक्यूशन, राइट? अभी तक हिटलर इज येट टू कम इन पिक्चर फॉर द परसिक्यूशन। डिस्पाइट दैट, अरेबियंस प्ले द प्रोपेगेंडा दैट टाइम that the Jews are the colonizers. They are making colonies. They are just another Western power who are trying to eradicate the indigenous people. और ये मैं बात कर रहा हूं 1920 के समय की, जब वो बड़े प्रताड़ित लोग थे। मतलब अभी तो we can say that Israel is a very hard nation. They are not a soft nation, of course. They are a very hard nation. So, but in that period, Israel is not created in the terms of nation state. Israel, the Jewish people don't have weapons. They were the wealthy peoples, but they have lost it from everywhere. They are like a very, उनकी हालत बिल्कुल कश्मीरी पंडितों की तरह थी उस वक्त। तो उसके बाद भी उन्होंने ये प्रोपेगेंडा किया, और somehow जो वर्ल्ड स्टार्टेड एक्सेप्टिंग दिस प्रोपेगेंडा। और
ये वो दौर था जब जो ग्रैंड मुफ्ती ऑफ जेरूसलम थे, उसके बाद जो बने अल हुसैनी, ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ हिटलर, और उनकी मुलाकात अक्सर हिटलर से होती थी। और पीपल अब जैसे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेनोमेनन क्या है कि हालांकि पैलेस्टाइन इज ऑल अबाउट द सुन्नी मुस्लिम्स, लेकिन दे गेट अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द शियाइट फ्रैक्शन। जो हिजबुल्लाह इज अ शियाइट फ्रैक्शन, और उसके साथ साथ उस समय भी जो शियाइट फ्रैक्शन था उससे बहुत सपोर्ट मिलता था। तो जो शिया कम्युनिटी थी, उन्होंने जैसे तेहरान में कुछ शिया कम्युनिटी थी, वहां के प्रिंटर में प्रिंटिंग प्रेस ने पूरे पोस्टर्स रिलीज किए, और पोस्टर इस लेवल तक रिलीज किए, एक तरफ में अली के पिक्चर थी और दूसरे तरफ हिटलर की। तो इसका कहने का मतलब ये था कि जो अली साहब हैं वो हमारे पहले इमाम हैं, और ये जो हिटलर है हमारे 12वें इमाम है। और कई लोग को बड़ा लगता है कि ये 12वें इमाम कैसे हो सकते हैं, तो होता नहीं है ना। बट ये सुन्नियों की सिर्फ का बात नहीं है ना, दे आर मोर सेक्ट्स, राइट। जो ट्वेल्थ ट्वेल्थ द ट्वेल्थ इस्लाम बुलाते भी हैं उसको, देयर इज अ नेम पर्टिकुलरली फॉर इट, बिकॉज़ दे बिलीव इन द ट्वेल्थ इमाम। सो दे इवन सॉ हिटलर एज अ ट्वेल्थ इमाम। There was a case where Hitler was compared with Muhammad and Prophet Muhammad, and these all are in record. It's not that it's not in record. उसके बाद उन्होंने देवर ओपनली स्लोगन्स होते थे जब द ज्यूज आर द मोस्ट वीक पीपल दैट टाइम, ज्यूज आर द डॉग्स, आवर डॉग्स। डिस्पाइट दैट, टिल नाउ, लाइक दिस इज द इंसिडेंस ऑफ 100 years बैक, आज भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है that they were the ally of Hitler. They persecuted the Jews before Hitler could do it. And their persecution of Jews is also not less of a number. That number is also huge. लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो विश्व में एक जो मोमिन संप्रदाय है या फिर जो इस्लाम संप्रदाय है, उसके लिए लोगों के मन में एक अजीब सी सहानुभूति पता नहीं क्यों रहती है। उनकी गलतियां कभी दिखती नहीं है इनको। और जो ये 56 इस्लामिक स्टेट है, कहीं ना कहीं जो उनका जो इट्स मोर अबाउट द ग्लोबल बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमी एज वेल, बिकॉज द फैक्टर ऑफ ऑयल एंड एक्सेट्रा, वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से इकोनॉमी को कंट्रोल जिस तरह से करते हैं, और जिस तरह के डील्स या फिर जो बिजनेस रिलेशंस होते हैं डिफरेंट कंट्रीज से, क्योंकि जियो पॉलिटिक्स तो बड़ा कॉम्प्लेक्स नेचर में आता है। तो इस वजह से व्हेन दे कम इन सपोर्ट ऑफ दीज पीपल, everyone takes a weak stand. I'm very sad to know that still we have not been able to take any strong stand for what is happening in Qatar, for the 8 people who are, we know the story, but still we have not been able to. And even in the case what happened with Nupur Sharma, in that time also we just bent in front of Qatar. Though our foreign policies are amazing, I would say that perhaps Jaishankar is one of the best external affairs minister which we have ever got. But as soon as it comes to the Islamists, we have still not been able to take a very good stand. So now we have a political party which stands for Hindutva, and which does works for it. They have done amazing works for Hindutva and the idea of the Hindu, to spread the idea of Hinduism. Despite that, they are not able to cope up with the new the menaces like this. So इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो इनका जो जियो पॉलिटिकल पावर है, that makes the countries vulnerable to them and their calls. We become the soft state when it comes to deal with those powers. Or whenever you become a soft state, the propaganda of those states starts springing out. So everyone knows that they're hiring actors. But again, that will not be the matter of concern that why Palestine is doing this. Why, like I said initially, that if Islamic states would have wanted, Islamic state as in the Muslim states, they would have collaborated with Israel and they could have gotten rid of Hamas if they really care for the people of the Palestine who are being, because it's obvious that even with the terrorists, they will not be safe, right? How can you like to have terrorists living in your house? If terrorists are in my house, I will evacuate it and I will like the people to take an action or do something. I will not live in the same house where the terrorists are living. So it's more to do with the geopolitics, and of course the reason that the hatred for the Jews comes from the book. So that somehow sums it to the case.
Actually, in the world, we are seeing a complete decline of dharma, lawfulness, because aggressor and defender. So aggressor can do attacks, but as soon as you try to defend, the human rights bodies and civilian victim card bodies, they all come into play. So there is no justice given. Like, and also the conflicts in the world are allowed to simmer by most of the Western nations, including country where I belong, USA. Continue. यहाँ पर भी आप देखेंगे कि सारे कॉन्फ्लिक्ट है, पैलेस्टाइन इसराइल कॉन्फ्लिक्ट अलाउड टू सिमर. अमेरिका ने दोनों साइड में फंडिंग किया है, दोनों साइड में. The conflict in North Korean Peninsula continuing. Conflict in Middle East. There was a Israel was trying to get into peace with Saudi and other countries, but with this incident, everything is shattered. Yeah. So these conflicts allow the certain blocks in the Western countries to retain their power. It's like divide and rule. There is no war happening in Europe like this. This is Europe. Always say karma aa raha hai वापस, because you see the Palestine protests every city in Europe. लंदन में तो 1 लाख का रैली हुआ. Australia also had almost like 20,000 people rally. So this is going on. So do you think that the perennial definition of justice, promoting terror and opposing terror at the same time, is going on? And that's why the organizations like UN are defunct now, because it is just a place where people can justify terror. 120 countries not opposing Hamas terror, and the Hamas chief addressing Indian youth in Kerala to fight the war anti-Hindutva. There is a posters over there, Hindutva, uproot Hindutva. So, how did the government of India allow this? How did this happen? Yes. And that's where I'm questioning the government too, that this should ideally not have happened at all. Like, I understand that till now you have not declared Hamas as a terror organization, but you have taken a stand to stand by Israel on a global context. You abstain from United Nations to make a statement again clear that yes, we stand by Israel, and because abstaining is also a decision. It's not just that if you say yes or no, it means, but it also means something. So we have taken a stand. Then how come this guy was led to come virtually and address the people and the From bashing Qatar. of, From yeah, Qatar. yeah, and that too when we should have locked the horns with the Qatar right now with what's happening with the naval officers, right? But still, a guy is sitting. So basically, you are ally of a country with whom you have stood and you have declared that we will stand in solidarity against the terror. You have made this stand. Then what you do? You let that terror organization, whom you have seen as a terrorist, though you have not declared it, but the statement is all about that. The leader of that is addressing from a country which is has taken a bizarre decision against 8 of our naval officers, right? He sits in that very country, and from there he's addressing the matter. Right now, external affairs should have logged on and said that, boss, why is this happening? Why is this guy sitting over there? That should have been the first thing. If and then on the other hand, you are treating the officers this way. So somehow and also the protest which ever are existing, like we would not see a single protest again from the Islamic world for what happened in Kerala. I had long back written one article about that. The time has come when the Muslims need to say not in my name. But when that will come onto the scene, if that doesn't come, you are a collaborator in a terrorism. I'm very clear about it, because if you can't take a stance, a principled stance, then there is a problem. And the problem is as such that if someday I saw that there are few protesters who are not even talking about Palestine. They are saying that Hamas is as good as our freedom fighters, right? There have been posts which have compared. There's some person named Iftikhar or someone who has written article which talks about, tries to compare the Hamas with our revolutionaries. So what's happening around? So where there is a doubt that even if, say, for time being, you assume that there were some great guys till say 10 days back or something like that, of say 15, 20 days back,
But what they did on 710, it was a medieval trait, medieval barbaric trait, which comes from the Turco-Mongol region. What they are doing, the way they are entering, the way, and everything is so planned and schemed, right? That they have the vehicles to take people to hostages, right? It's all arranged. They're coming, taking, coming back, and loading, unloading. That's how they're operating. So we have seen in front of our eyes that what's transpiring, right? So still, if people turn blind eye to it, or don't have even audacity to just say that, boss, whatever it may happen, let's take a principled stand and support Israel, because they are trying to cleanse terrorism. They're trying to clean something which reminded us of which perhaps Ghazni or Gori would have done long back, and perhaps maybe ugly or whatever, but they were certainly on the parallel lines. So we need to come back to the idea of the dharma, and people will need to do it. But when the time will come, it looks very I am quite I'm living in a time of disdain. I am not very hopeful about this, because with the organizations around, like United Nations, with the complex geopolitics, that we may have need to be the friends with some Islamic state for our own business goals, and etc., etc. So on one hand, we are the ally of Russia for obvious reason, but Russia is kind of supporting Palestine and threatening USA, and we were going against the narrative of USA when the Ukraine-Russia war was going. So this complex geopolitics also makes a case very tough for dharma to sustain. So the period which in the earlier times, dharma sustained everywhere, because it was a land of Sanatana everywhere. Everyone knew that what is the eternal law. Everyone worked in accordance to it. So there was no such kind of confusion or doubts that, whether I have to side by this. The few of the things were certainly black and white. So that's what I believe, that somehow it's getting complex day by day. But the country like India, which is somewhere between hard and the soft state, need to turn hard, need to take stands against the countries like Qatar, and that can only change, because these countries, as far as the nations like United States are concerned, United Kingdom are concerned, they are not the land of dharma. So, in that case, we will have to take the lead. Our government needs to really show the spine at this case also, where they don't show, but they do show the spine, but for many good reasons, but definitely not for where it's needed, at this point where this needed to. अच्छा, इसमें एक दिस लास्ट पॉइंट, और लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसके बाद। सब लोग जो देख रहे हैं और शेयर करते रहिए वीडियो को, तो ताकि मैक्सिमम ऑडियंस कैन जॉइन। हमारा लाइव शोज का एक्सपेरिमेंट चल रहा है अभी, एंड yesterday was a great show. Almost 600 people plus were joining yesterday. तो मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कतर को सीआई ऑपरेशन है, एवरी अमेरिकन नोज दैट। सी हमारा आउटपोस्ट है, इट्स लाइक ए लिविंग एयरक्राफ्ट कैरियर इन द मिडिल ईस्ट, और वो ओपनली इट वर्क्स ऑन द यूएस के इंटेलिजेंस पे चलता है वो पूरा। तो हमास का इंसिडेंट भारत को उकसाने के लिए, ताकि भारत के इधर से हो, एंड मेनी ऑफ दीज इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आल्सो वर्क विद इन द इंडियन इंटेलिजेंस ऑपरेशंस आल्सो। ये कोऑपरेशन चल रहा है, साथ में दोनों साइड में काम चल रहा है। सो वी सी कि एक डायरेक्ट इंस्टिगेशन किया, एक केरला में ब्लास्ट हुआ टू समहाउ, एंड राहुल गांधी उज्बेकिस्तान में है, उज्बेकिस्तान भी उधर भी एजेंसी ऑपरेशन चलता है। सो ऑल दीज इंसिडेंट्स हैपनिंग टू elicit a response from India कि कुछ वो गलत स्टेप ले। दैट मीन्स द इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर G20 बिकेम सक्सेसफुल, इंडियन गवर्नमेंट इज लाइक क्या हो गया कि मोदी जी का गवर्नमेंट सबकी आंखों में खटक रहा है इन द वेस्ट। बाइडेन का स्टेटमेंट ही आ गया पर 2 दिन पहले। So so this is the is rattled. They are rattled. The West is rattled right now. How to control India or to fight a bigger battle? Ultimately, दुश्मन तो इंडिया ही है। Neither China, China CPC तो एजेंसी से ही बना था, अमेरिकन एजेंसीज ने बनाया था सीपीसी। Everybody knows that. तो रशिया एंड इंडिया, these are the two countries outside their bloc. इंडिया में थोड़ा सॉफ्ट ज्यादा है क्योंकि ये एजेंसी सब सारे डिपार्टमेंट से इंटरफेयर कर चुके हैं इंडिया में। They are working in all agencies of India. All ministries are working. So I think that is a lapse I see. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सारा जो इंसिडेंट्स जो चल रहा है लाइक ए चेस बोर्ड की तरह, एंड
to instigate a response from India. और इसलिए भारतीय गवर्नमेंट इज इन अ वेरी टाइट स्पॉट एक्चुअली राइट नाउ, वेरी टाइट स्पॉट कि किसको, वेरी बैलेंस्ड ऑप्शंस दे हैव टू चूज नाउ. व्हाट डू यू सी? Yes, I completely agree to that point because जैसे मैंने बताया पहले भी कि मुझे बिल्कुल लगता है कि भारत ही एक धार्मिक स्टेट है जो अभी भी एग्जिस्ट करता है और बाकी जो स्टेट है वो धार्मिक नहीं है एंड दे हैव अ वेरी डिफरेंट वे टू लिव इन द देयर जियोपॉलिटिक्स इज वेरी डिफरेंट. लेकिन मेरे ओपिनियन से भारत को अब थोड़ा सा अलग रुख लेना पड़ेगा. अभी क्या हुआ कि ये G20 के बाद G20 में जो मिडिल ईस्ट कॉरिडोर था दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट. अभी वो प्रोजेक्ट पूरी तरह से आई डोंट नो, आई स्टिल एम होपफुल बिकॉज ऑफ द मैन कॉल्ड मोदी दैट कुछ तो हो जाएगा शायद. आई स्टिल एम होपफुल. लेकिन अभी मेरे होप को अगर मैं साइड करूं और प्रैक्टिकलिटीज पे देखूं, सो दैट कॉरिडोर इज कंप्लीटली गॉन. एंड विद दैट कॉरिडोर गोइंग अगेन, जो भारत का मतलब वो कॉरिडोर के आने के बाद से जो भारत का जो, मैं सपना नहीं बोलूंगा बट जो हमारी डेस्टिनी है आगे में, जो एक जायंटिक इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ बढ़ने के लिए in terms of PPP, not in terms of nominal GDP, because उसमें तो it's very tough to match with the larger economies like US and UK because there's a very strong difference in terms of GDP that way. लेकिन we would have grown really big. एंड जो इस तरह के स्टेप्स जितने भी हम उठा रहे थे और जितने भी जो वॉर्स होते हैं, वॉर्स कहीं ना कहीं एक पूरी डिसस्टेबिलिटी लेकर के आती है पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में. और ये वॉर जो इसराइल और हमास का वॉर है वो कहीं ना कहीं इस कॉरिडोर को इफेक्ट किया. उसके बाद भी इट्स फर्दर, अभी तो उसका इफेक्ट नहीं दिख रहा है बट समवेयर डाउन द लाइन इफ फर्दर प्रोलॉन्ग्स it may start showing some impact on the economy too. It will start showing things, and a lot of businesses which are the aspirational business which were about to come may just not happen. It may too happen, and they are certainly trying to do it. But India, one very strong step what government had taken, maybe that people are not able to relate with it, that how it's very important. It was about Atmanirbhar Bharat, of about creating the things in our own nation, where defense was one thing. that defense पे हम काफी फोकस कर रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर को हम यहाँ पे भारत में ही इंडिजिनस वे में डेवलप करने की कोशिश करें, and so on and on. But we have still miles to go. We are still nowhere close where we can say that we can become very hard state that way. And until and unless Bharat becomes hard state, and Bharat's becoming hard state will entirely depend upon our indigenous economic system really going in, which we completely cut off the idea of interdependence. When this dharmic states only depends on its own and it doesn't require the aid from anyone. And once that happens, things will start changing. So whether it's about dealing with Qatar, or whether it's dealing with smallest, whether it's dealing with the larger economies like China, which is up there in the eastern side, it will be much more easier. Now we have learned to deal with United States of America, but we have not been able to really play the game with the countries like China. We have not been very successful while playing with the Islamic states. We somehow always bend to the demands what they make, and they want us to dance, and we dance to their tunes. So that slowly needs to change, and this will change only with the flourishing of the economy. And what you are saying is very true. We are at the spot, but still something needs to be done. हाँ, कुछ तो होना है. एंड आई थिंक वी आर टॉप ऑफ द आवर, आपको भी जाना है कहीं पे. सो आई Yes. विल जस्ट टेक सम कमेंट्स फ्रॉम द व्यूअर्स. Yeah. गणेश यादव जी लिखते हैं कि गाजा से डेथ का जो नंबर आ रहा है वो गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया है. ये झूठे नंबर है. 5 मारे तो 50 मारे बताएंगे. थ्रू आउट द हिस्ट्री, दे हैव लाइड एक्चुअली. तो वो तो चलता ही है. Yeah. So ये तो चलता रहेगा. The larger picture is that numbers तो कुछ भी हो सकता है, but terrorist is a terrorist that needs to be eliminated. That's it. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड सत्यमेव जयते, जय माँ भारती. वेरी गुड, थैंक यू. संदीप दंतानी जी, थैंक यू. जय सनातन धर्म की. एंड देन देयर इज वन मोर कमेंट विल टेक जस्ट नाउ. अभी तो हम नरसंहार की बात ही नहीं करते हैं.
yes, transgenerational trauma and or the Stockholm syndrome, which goes on everywhere. वो इज़राइल में भी चल रहा है. There are, अगर people do not know, in America, the 80% of Jews vote for Democrats. 80%. Yeah. In America, 80% of Hindus vote for Democrats. And so it's a Jews and Hindus have that similarity in voting pattern also, where both of them vote together Democrats who have always worked against them. So it's all good. It means it's all normal, but it's not something to be surprised about. So thank you, Abbas, for coming on the show after a long time. And we'll Yeah, do no some problem other here. shows. Sure. और आबास का एक बुक है एक्स कम्युनिस्ट, उसको जरूर पढ़िएगा आप. आबास मल्दहियार, put it out there. It's a bestseller now, right, in India, one of the Yes. best sellers. So जरूर पढ़ना उसका पुस्तक, because he's done his own experiences in that book. So thank you all very much for joining today. Namaste, and I'll see you again in the next show. Namaste.